समस्त नमस्कार। मॉर्निंग मसला कार्यक्रम को आपन स्वागत। मॉर्निंग मसला कार्यक्रम रे आज आम भापुर रो किछि प्रसंग आलोचना करिबा। खंडपड़ा निर्वाचन मंडली रो भापुर ब्लॉक, ये ब्लॉक होछि संपूर्ण भाव में विरोधी शून्य। एठी केवल गोटे दल अछि बीजेडी। एठी बीजेपी कांग्रेस गर स्थिति शून्य। सेथिपई एठी संपूर्ण भाव में मनमुखी शासन चलछि। आ सौम्य रंजन पट्टनायक प्रमुख विरोधी नेता थिले। गोटे थर हाथरू लड़ी पराजित होते, आ गोटे थर माठियारू लड़ी मध्य पराजित होते। परवर्ती समय से निजर स्वार्थ को जड़ांजलि दे शंकर द्वारस्थ होते। आ शंकर द्वारस्थ होगा पर महोदय निजर आधिपत्य जाहिर करने को आरंभ करदे। एवं तांकर जो कर्मी माने भोकिला थिले, राजनैतिक भोक जोटा थिला कर्मी मानकर, से राजनैतिक भोक बर्तमान मेंटेया को लगिले। आरंभ हो गला पहाड़ लुट। अबाधरे से खंडपड़ा निर्वाचन मंडली थे पहाड़ मान सब लुट आरंभ करते। आपण मैंने समस्ते जानिथिबे जे महोदय घर हूँ केन्दुझर। से होती खनि व्यवसायी। स्थानीय विधायक हवा पर खनि बेपार पुणी थे आरंभ करदे। आज जो किछि दिन तले जो कान्हांकर जो गुरुतर अवस्था है सी ही दायी। खनि जो पहाड़ काटुथिबा पहाड़ माफिया माने दायी। कारण सेठु दैनिक शह शह संख्यार ट्रक चिप्स चालन होचे। पहाड़ को से खोलिकी खाई सारे। कोटी कोटी टंकार बेपार सेठी चलছে। से बेपार को राजनीति कटा जीव। किंतु एठी बहुत गुड़े अमूल्य जीवन दीप लिभि गलानी कि पंगु हो गलानी। विशेषकर बड़ सहरांचल रे से अबाध पहाड़ लुट चली। भापुर ब्लॉक रे जड़े नुआ वीडियो बर्तमान जोग देइछंती किछि दिन हबो। से महोदय गोटे फेसबुक अकाउंट खोली। जो फेसबुक अकाउंट तांकर सब विभिन्न गस्त संपर्क में सूचना दौरान निहाती भाव में भापुर वीडियो महोदय को अनुरोध, भापुर तहसीलदार को अनुरोध जो पहाड़ लुट सब चली से टिके सुपरविजन करंतु। केते अनुमति दि जाइछि, केते खोला जाउछि, दैनिक केते ट्रक चिप्स चालन होछि। एठी तो पूरा साम्राज्य गोटे कर दिन पाखापाखि 100 ରୁ 200 एम्प्लॉई से खनि रे काम कर। विशाल अट्टालिका तैयारी करा जायछि। अणओसारिया रास्ता रे शह शह संख्यार टिपर यातायात करुछि, जहाँफल बहुत लोकंर जीवन गलानी, बहुत गुरुतर आहत हेलानी। बांछानिधि पैड़ा मौसा को बहुत धन्यवाद, जहाँ सोशल मीडिया माध्यम से सचेतनता वार्ता प्रचार कर। सचेतनता वार्ता प्रचार करूँ। से बांछानिधि पैड़ा मौसा को बहुत बहुत धन्यवाद। आठी भापुर रे बर्तमान 2 जन राज चली। गयाराज बेणुराज 2 जन होती बीजेडी रो। आगुरु दोस्ती थिला, वर्तमान दुश्मनी। एठी लोक मान संपूर्ण भाव में भयभीत कर रखाई। खंडपड़ारे विरोधी किसी अच्छा किंतु भापुर विरोधी नहांती। निश्चिंत भाव में सिलट से जवाब दब। झाड़ूर नुआ अवतार सिलट। आ सिलट ही से साइलेंट करेब, एटा आमर प्रतिश्रुति। निश्चिंत भाव में गया बेणु समय बाबू आ सेमानकर चेला चामुंडा से संपूर्ण भाव में सिलट ही साइलेंट कर। बांछा पैड़ा भली जदि किसी मऊसा हूँ
माउसी हूँ भाई हूँ भौणी हूँ जदि सामाजिक गणमाध्यम लोक सचेतन कराइपारे ताले निश्चिंत भाव में भापुर में किछिटा परिवर्तन आसिबो। आमे तो सिलट तरफ आमर लोकसभा प्रार्थी 21 लोकसभा प्रार्थी घोषणा सरी पाखापाखि 100 विधानसभा प्रार्थी घोषणा सरी एवं पंचायत इलेक्शन पे मध्य किसी गोटे रणनीति प्रस्तुत चलছে। विशेषकर आमे से भापुर आमर अभियान आरंभ करिबा। सोमू भौणी जने कमेंट करछंती भाई डॉक्टर आज कहले लॉन्ग टाइम कान्हार ट्रीटमेंट चलियो। हाँ बहुत भल कथाटे कहते आप दुखर कथाटी भी कहते जे एटी जो अबाधरे जो चिप्स चालाण होची एपटे महानदी बाली चालाण होची जे टिपर डंपर ट्रक धक्कार प्रत्येक दिन किसी ना किसी दुर्घटना घटुची सीधमूल बाली चालाण होची एपटे जिते सब पहाड़ अच्छी से चिप्स चालाण होचे किंतु ये जो मानकर सब क्षति होची से भरणा दब किए रेडक्रॉस पार्टी तरफ मात्र 10,000 टंकार सहायता दिगला कान्हा को किंतु कलेक्टर महोदय कहले वी आर फॉलोइंग इट अप वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। मु पूर्व लाइव से कथा आलोचना करछि आमे संपूर्ण प्रकार सहयोग करिपारिबु बोली कलेक्टर कहते किंतु वर्तमान सुधा जो 2 दिन तले कथा होती कान्हार परिवार लोकों सहित से कहते 3 लाख खर्च है गाड़ी वाला लक्षे टका देचे आउ किसी सामाजिक संगठन अनन्या फाउंडेशन आउ किसी बड़ सहर गोटे सामाजिक संगठन से मैंने किसी आर्थिक सहायता देछंती आ सरकार तरफ 10,000 टंका मिलला कारण तांकर गाँ लोक रास्ता रोक करथिले। एपटे कलेक्टर कहउछंती जे आमे संपूर्ण सहयोग करिपारिबु किंतु करूछंती कि नहीं सेटा कहि नांती। जदि कलेक्टर दम अछि एपरे प्रेस मीट करंतु कलेक्टर विषय गोटे जिल्लार मुख्य हिसाब से कलेक्टर कहि परिबे कि जे भापुर रे जो अबाध पहाड़ लुट चली से पर आपण अवगत अछंती ना नहीं। आपण तो ये पाखापाखि 2.5 वर्ष हम आप नयगढ़ जिलार जिलापाल रही नयगढ़ में आप नुआ नुह आपण को भल इंग्लीश कही आसे परिप्रसंग आप चुप थे आपण गेट सामने लिखाई झील को बंचातु झील को पढ़ातु किंतु से नयगढ़ नुआ गाँव दिलीप भाई झील आद्याशा आप चुप परी चुप आठी कान्हा भी गोटे प्रकार चुप। विशेषकर मुझे कहूँ जे आप से कान्हा प्रसंग में आज भापुर जो कान्हा उपर गोटे प्रेसमिट करूँ जे दुर्घटना है कौन पे दुर्घटना दायी किए एवं ताको आर्थिक सहायता तुरंत प्रदान करूँ कहीं आप निजे कहते स्वीकार कर वी आर फॉलोइंग इट अप वी आर लुकिंग इनटू द मैटर। जदि आप लुकिंग इनटू द मैटर इफ यू आर लुकिंग इनटू द मैटर एंड यू आर फॉलोइंग इट अप then you are responsible for the treatment of Kanha, then why are you silent? Don't you know how mafia are looting the mountain? I think you don't know. But in this live video I am telling that in Bhapur mafias are ruling. You know English better, Mr. Collector Pomatudu. क्षमा करिए मिस कलेक्टर पोमाटुडू, you know English better, that's why I am telling in English. This accident is due to the loot of mountain. Till now so many cases has been occurred. Now it is the duty of collector to look into the matter, how mafias are looting the natural resources of Bhapur. You are the collector and you have been posted here since last 2 years and 2 years 6 months. But why are you silent? Why are you silent on Pari case? In your office board,
of his gate it is written, save children, save girl and educate girl. But why are you silent? I have already talked to you. We have discussed everything. First of all, I give thank you to you. And now, please open your mouth. During the COVID period, you are also silent. You can look into your counterparts, your colleagues of different districts, like Vijay Amrut Kulange, collector of Ganjam. Mr. Poman Tudu, you should follow Mr. Vijay Amrut Kulange. How he was managing the COVID, how aggressively he was conducting the press meet. But till now, you are not yet conducted any press meet in connection with Pari case or COVID management, closure of sugarcane industry, or Adyasa case, Kanha case. I hope, I am sure you know English better, because when I started with you in Odia, you started with English. I also know English better. That day I also talked to Sub-Collector Sir, Lagnajit Sir. I specially give thank you to Sub-Collector Mr. Lagnajit Raut Sir. Really speaking, he is a very good administrator, very good officer, but not like you. I hope this message will reach you. Especially, I will send this video in your WhatsApp number, and I hope you will watch it from the beginning to end. And you are from Odisha. Still, as you are collector, you like to speak in English. But I have met Mr. N. Tirumala Naik, who was the collector before you. He speaks Odia very nicely, though he was from Andhra Pradesh. Okay, I am not telling, or I am not joking in which language you are telling. But subject matters. You have to reply, you have to take care of Kanha and Adyasa. If you don't take care of them, then definitely we'll start our protest. That time you cannot sleep. Okay? I am not telling anything more. But definitely, as you said, you are following it up, you are looking into the matter. I am also following few issues up, and I am also looking into few issues. Until these issues are resolved, I will definitely raise my voice in social media as well as in ground zero. I hope you understand it better. Best of luck, and I am waiting for your response. Now Snigdha Mahanti came. She has posted one comment. Have a look at this comment. Please, Mr. Sahu, you can go most and verify all Noagarh case. Please go most. Thank you, Snigdha Mahanti madam. Fake ID. Now, fake IDs are ruling in social media. I really appreciate. Near sir, namaskar. You are the inspiration. I really appreciate you. And Aditya Das case has reached
to this extent due to your support, and that 161 report which causes blast in this case, that is due to Niyar sir, and we hope the best from Niyar sir. And here Aditya Das case has not been Snigdha Mahanti. Okay, Snigdha Mahanti, you can comment. I will see your comment. You can comment it. Mr. Sahu, you come to Odisha and change the Odisha government. Yes, definitely. We have declared our candidate list. Already we have declared 21 Lok Sabha candidate list, and continuously our candidates are coming to the live and they are telling about their thoughts. They are sharing about their thoughts, and they are continuously since last 1 year and 1 year 6 months they have been raising their voice in different issues. I know Snigdha Mahanti, Kanta Baunso, Mr. V.K. Pandian, Mr. Naveen Patnaik, and Noyagad collector Kumar Tudu, they like English the most. That's why I am doing this live in English. Kala Boisakhi has written one comment. I am coming now. Namaskar. Yeah. Okay. Continue. And yeah, we have declared already. We have declared all the 21 Lok Sabha seats, and except 8 seats, we have declared all the MLAs list related to the corresponding Lok Sabha, and few are pending with the approval of our colleagues. Once they approve, definitely we will publish that report. And this slate will teach a lesson to Mr. Naveen Patnaik and their team. These days are coming very soon, and we will give our test in coming Panchayat election. Definitely we will start our mission from Bhapur. We thought to start our mission in Pipili by-election, but due to some strategy, due to some political strategy, we changed our opinion. But we are doing politics. People can tell we are doing dirty politics over dead bodies. Like our ruling party, they are telling opposition are doing dirty politics. Law goes in their way. Always our ruling party, they used to tell a single line: law is going on its way. But till now, Aditya Das, Pori, Mahanga series murder case, Mamita Meher, ACF Samay Ranjan, nobody got the justice. So definitely people can ask, where law is going, how law is going, for whom law is going, who is controlling the law. And in High Court, we can get date after date. I don't know why this is happening, but we have the patience. We have the patience. We will continue our voice as before until we reach the destination. I think destination is a dream. So many topics will come. We have miles to go. Still, whatever issues we touch, we will give them a finish to these issues. We will never leave. It may be Aditya Das case, Pori case, ACF Samay Ranjan case, Mamita Meher case, education issues, healthcare issues. And one more thing, we have declared our minister list.
And in previous life, our forest minister, Mr. Santanu Bisway, has already given his opinion regarding the law and order situation of Odisha and few statements about the forest department. And continuously our Bhubaneswar Lok Sabha candidate Sridhar Pradhan, Puri Lok Sabha candidate Biren Das, Kotak Lok Sabha candidate Sukant Padhi, they have been raising their voice in the Facebook live, and definitely we will continue this trend, and definitely this slate mission will bring a revolution in the political history of Odisha. And I know Pandian and Mr. Navin and two of their team members who know English better, like COVID spokesperson Mr. Subrat Bagchi, Bhubaneswar MP candidate Arup Patnaik, and a few people are in their Navin's team. They will definitely see this video. Okay, we'll continue next time. I started this video in English because Noyagad collector Mr. Poma Tudu is the inspiration. When I started talking in Odia with Mr. Poma Tudu, she changed the language. She started talking with me in English. That's why I started this video in English, so that Mr. Poma Tudu and a few of the Mr. Arun Bothra, Deepak Kumar, Samendra Priyadarshi, Sanjeev Panda, they will better know this video and they will get a gist from this video. And a few of our friends are from other states. They will also get idea about this thing, because our national media is not covering the news of Odisha. So we have to continue this kind of video. Occasionally we have to do like this. Okay, thanks a lot. Good morning. Thanks a lot. Bye.